Yo, so sweeties, welcome back. In today's video, I'm gonna explain you that where is your God, who is your God, and how to find your God, how is your God, every single thing in this single video, right? So I want all of you to watch this video till the end, especially if you are, I would say, 15 to 20. Watch me till the end. I'll let you something new that you don't know before, right? So let's fucking go. तो क्या होता है ना, a lot of people are there जिनको लगता है कि God exists and किसी को लगता है कि God doesn't exist. Simple as that. But we don't have to talk about on this thing that if he exists or if he not, right? We'll talk about something that really matters, right? तो यहाँ पे क्या होता है 99% द मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो भी गॉड को वर्शिप करते हैं फॉर एक्स गॉड आई वुड से, ठीक है, किसी भी रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दे वर्शिप गॉड देन दे एक्सपेक्ट समथिंग इन द बैक, दे वर्शिप गॉड एंड देन दे एक्सपेक्ट समथिंग इन द बैक, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो गॉड को वर्शिप करते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि उनको कुछ जो है रिवॉर्ड मिलेगा, दे विल गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, राइट? तुमने देखा होगा पीपल वेयर ऑलवेज वर्शिपिंग देयर गॉड एंड दे विल लाइक कि गॉड प्लीज मेरा ये एग्जाम निकल जाए, गॉड प्लीज मेरा ये हो जाए, गॉड प्लीज ब्ला 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 ब्ला, everything for the reason. So in that way you have to realize one thing, that if you are that kind of person, you have to realize one thing, that God is not the one who is coming and telling you that worship me. He's not the one. He's not telling you that worship me, right? He don't even want you to believe in him. He's not the one who is coming and telling you that Aryan, believe in me. He is not the one, right? So you have to keep this thing in mind, and that accept this thing in mind, that if he is not the one who is telling you to believe in him, that it is like it's your choice, right? It's your choice. You are the one who is believing in him. Without, it's your choice, full on you, right? And God is like, you are like him, should I believe in you? God is like, up to you, man, up to you, I don't know, right? So you have to just keep one thing in mind, it's your choice. If you want to believe in him, believe in him. If you don't want to, don't. Simple as that, right? So what you have to do next time now, whenever you are believing in any god, right? I would say any god. I'm not saying you to don't believe in God. If you want to believe in him, right? But you have to just keep one thing in mind, that don't expect anything in the back. Don't expect anything in the back. Don't expect that if I'll believe in God, if I'll do all of the things for God, if I'll make efforts for him, he's gonna give me something in the back. Of course he's not gonna give you anything in the back, because there are thousands of people doing the same thing you are doing, and maybe better than you, okay? So you have to just keep this thing in mind, that do it for the cultural shock, do it for the, I would say, positiveness. You see him as your idol, right? Idol, you will see him as your idol. Yeah, I believe in him, and he motivates me somehow, and I learned a lot from my God, and I see like kind of you would say, you would like, yeah, in a God way, in a cultural shock, I would say, right? Not in a that wala perspective you want something in the back, right? Don't ever expect something in the back, right? That's all you have to do, and whenever next time you're worshiping any God, right? So ये चीज़ तुमको दिमाग में रख के चलनी है कि भाई तुम यहाँ पे तुम समझो बात को, कि गॉड तुमको आगे से आके नहीं बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तू वर्शिप कर, ठीक है, मेरे को तू ये कर, मेरे लिए एफर्ट्स मान, नहीं, ही इज नॉट द वन, यू आर द वन, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू, मैन. यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, कि तुमको कुछ भी जो है एक्सपेक्ट नहीं करना बैक में कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए. वाई? ही इज नॉट द वन ना, तो तुम कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, ठीक है. अनदर थिंग, अब यहाँ पे आती है बात, दैट हाउ गॉड इज गोना हेल्प यू एंड हाउ यू गोना हेल्प योर सेल्फ, राइट? सो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त मेरे को पहले बहुत बोलते थे कि भाई गॉड वगैरह तू बता, तेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, ठीक है, तेरा क्या पीओवी है, व्हाट्स योर थॉट्स? तो आई वाज लाइक कि भाई, मैं उनको एग्जांपल देता था, ठीक है, कि इफ़ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड इफ़ यू फॉल डाउन फ्रॉम दैट, ठीक है, अगर तुम एक माउंटेन के टॉप पे हो, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, एंड तुम वहाँ से नीचे गिर जाते हो, एंड देर इज़ अ टहनी, एंड अगर तुम उस टहनी को पकड़ते हो, तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम उसको पकड़ते हो तो यू विल बी अलाइव, एंड अगर तुम नहीं पकड़ते यू विल बी डेड. सिंपल एज दैट. तुम्हारे पास यहाँ पे दो चांस है, ठीक है. अब यहाँ पे जो 99% मेजॉरिटी होगी, जो पीपल हु बिलीव्स इन गॉड, दे विल लाइक कि गॉड इज गोना सेव मी, गॉड सेव मी, दे विल बी डेड, ट्रस्ट मी, दे विल बी डेड. यहाँ पे 1% लोग बोल सकते हैं कि नो, गॉड इज गोना सेव मी दैट टाइम. डिल्यूजनल मत बनो यहाँ पे. जस्ट कम टू द रियल प्रैक्टिस. वेट फॉर अ सेकंड, आई एम रिसीविंग अ कॉल. Wait for a sec. That time just believe कि भाई that thing is not gonna happen, right? तुमको ऐसा नहीं होगा कि गॉड तुमको वहाँ पे बचा लेंगे. You will be dead अगर तुम वो चीज़ करते हो. Another thing, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम उस टहनी को पकड़ो. The fact is तुम उस टहनी को पकड़ो, right? अब उस टहनी को पकड़ने के लिए कौन एफर्ट मारेगा? yourself, right? तुम वहाँ पे अपने हाथ से जो है अपना हाथ लेके जाओगे टहनी तक, एंड देन यू विल, तुम उस टहनी को पकड़ोगे, ठीक है, एंड जब तुम उस टहनी को पकड़ोगे तुम वहाँ पे बच जाओगे, यू विल बी अलाइव, राइट? तो उस टहनी तक जो हाथ गया था, उस वो हाथ किसका था? ऑफ कोर्स तुम्हारा था, राइट? तो हु वाज देयर टू मेक दैट एफर्ट?
right? You saved yourself from that now. So you have to just realize one thing in your mind. You have to keep one thing in your mind ki maybe somewhere in the universe he exists, maybe somewhere in the universe God exists, but for you, for yourself, the God is inside you. The God is you. You have to be God for yourself. You have to save yourself. You have to achieve all of your goals. You have to be God for yourself, and you are the real God. You are the real God. When we were kids, to in our schools, the teacher used to tell us that the God is inside you. So in this video, I explained you somehow that with examples that how the God is inside you. How is that? How he is there, right? I explained you basically this thing, right? So I want you to just accept this fact that if you want to achieve anything in the world, and if you want to basically देखो कुछ भी चीज तुम, if you want to be successful in your career, or if you even want like something, चाय का कप पास में लेके आना दूर से, ठीक है? तो who is gonna make that effort? You are the one motherfucker who is gonna go there and take the चाय का कप from there and then bring that cup here, right? So तुम खुद हो वो चीज, तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि maybe somewhere in the universe God exists, but for you, for yourself, the God is you and the God is inside you. Simple as that. I hope तुम लोग को ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा. That's pretty much for this video. I'll see you in the next one here.